Very good morning, all of you. Today we will discuss about the exception part 3. In last lecture before that, we discuss what is the theory of exception, what is the theory of exception handling, and how we will handle the exception, what is the superior class of exception, like that stuff. And yesterday we did the practical of try and catch. Okay, so just I will quickly revise what is a try and catch. See, if developer uh, if developer writes a code and that code may occur the error, then that code must be written inside the try block. के अंदर आपको क्या करना है? Code that causes may, here I'm using a word, that code that may causes error. अगर ऐसा लगता है डेवलपर को कि एरर आ सकता है, then that code will be placed inside the try block, and after the end of that try block we need to use to catch. Okay, so what type of exception? See, for example, we know that there are synchronous exception and asynchronous exceptions are there. Asynchronous is nothing but hardware related, and synchronous matlab that means software related exception. Okay, so inside that, if you don't know what kind of exception is, for example, synchronous में भी क्या type होते हैं? There is a arithmetic exception, number format exception. Example. After that, array out of bound exception. Such a type of exception will occur in synchronous. So if you don't know what kind of exception is, then in that case, what should we do? We will provide the superior class of this synchronous exception. And what is the superior class of this synchronous exception? That is a exception. अगर ये भी नहीं पता है, then the superior class of exception is throwable. Okay, so we need to mention this exception inside the catch. So here I don't know whether we got the arithmetic exception. I don't know whether we got the number format exception. I don't know whether we got the array out of bound of exception. Then I will use superior name. After that, I will create the object. That object will return what kind of exception is, and inside that we will write some statement. Okay, so what statement? We need to convert user friendly message into we need to convert system error into user friendly message. So here I will use some dot out dot println dot bracket. Here I will use message whatever it may be plus symbol. After that, object of exception. Here I can use ea. This one is a variable. I can use abc also. Okay, so here I will use abc. That's it. The message will be printed along with exception. Whatever message we have, we will print. Okay, but what happens if program contains more than one exception? For example, that program contains arithmetic exception, that program contains array out of bound exception, that program contains any other exception. So in that case, we need to catch multiple exceptions. In that case we need to catch multiple exception. अब एक प्रोग्राम के अंदर एक ही एक्सेप्शन हैंडल हो सकता है. फॉर एग्जांपल, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है तो नंबर फॉर्मेट ही हैंडल होगा, अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक ही हैंडल. सो फॉर दैट पर्पस इन्होंने क्या है, ट्राई, inside that I will write a code that causes error, may causes error. Suppose I paste it here, and after that I will use multiple catch statement. Make a note of that. This question will arise when interview. Okay, so this question will ask in the interview. So I can write multiple catch statement. After that I will write multiple catch. The question क्या होगा कि can I use multiple catch statement in a single program? The answer is yes, you can write, but make a note of that the object must be different. यहाँ मैंने लिखा है for example arithmetic exception और उसका object. यहाँ मैंने लिखा है number format. I am using a shortcut. Okay, exception उसका object. After that I will write catch one more time. Here I will use number format exception. So here I will write arithmetic, sorry,
array out of bound exception. Like that, we can write multiple. So this is the program. Okay, so we need to take care of this syntax. So let's start with the program. In that, first of all, we'll handle the number format exception, and later on we will handle the other exception or both the exceptions. Okay, this I will show you what is the difference between multiple catch statement and normal. Okay, so let's start with the code. Class. Here I will use demo. Just I will use demo 2. That I'm using a curly brace. Here I will use a semicolon. It's not mandatory. 7. Here I will use double quote. Inside that I will paste my program name. Extension. So now inside that, just I will use a scanner class. So for that I will use input one class. Input java dot util dot scanner. I imported this class. So inside that, just I will write main method. Public public void main, that string of AIGS array. Instead of that AIGS, we can use your name. For example, here I'm trying to use PS. So why we need this? Okay, we already discussed that if user wants to accept the data in the form of command line argument, then I will use this argument. Okay, here we हम पढ़ने वाले how we will accept the values from command from. See, user से हम value ले रहे हैं, that will be the okay. There will be a different kinds of things. For example, scanner class is there, data input stream class is there, buffer reader class is there. These data input stream and buffer reader classes will be seen in a file handling chapter. Okay, but there are different kinds of way. First of all, scanner class is used to accept the value, data input stream class is used to accept the value, buffer reader class is the used to accept the value. Similarly, command line argument is available to accept the value. Okay, so here is a main method, public static void main. So inside that, here before writing the try, we will accept the value from the user. So make a note of that. See, I will write here try, curly brace open close, and at the bottom of that, I will write catch, curly brace open close. That's it. So this is the syntax. Okay, while doing the code, first of all, we need to use this such type of syntax. कि try के अंदर क्या लिखना है, catch के अंदर क्या लिखना है. If you had multiple catch statement, उसके अंदर क्या लिखना है. See, catch. Here I will use. तो अभी हमें ऐसा प्रोग्राम करना है that will handle the number format exception along with arithmetic exception. Okay, so earlier we did the program. See, this one is a program which can handle only one type of exception. Okay, which will handle one type of exception. Now today we need to do the program which will handle multiple exception, whether it is a number format exception, whether it is a arithmetic option. Okay, so assume that कि कुछ exception handle नहीं हुआ है. Okay, so for that example there is a no arithmetic exception, no number format exception, so we can use another method to handle other exceptions also. Okay, so we don't know about array out of bound exception. So instead of that I will use finally. Okay, finally will print अगर कुछ भी exception handle नहीं हुआ है कौन सा भी तो finally will be print. So let's do the example. So inside that just I will accept the value from the user. Okay, so before that just I will write a code to accept the value. So here I will use scanner object equals to new scanner bracket. I will use dot in. Here I will use the termination. Now this message is created. Now we'll accept the value from the user. अब value user से accept करना है. ये मैं try के बाहर लिखूँ या अंदर, ये आपको सोचना है. Okay. See, अगर मैंने बाहर लिखा तो exception catch नहीं होगा. What is the reason? अगर user ने enter किया
वन, ओके, ओ एंड ई, और उसको हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो टाइप कास्ट नहीं होगा, मतलब कन्वर्जन नहीं होगा स्ट्रिंग टू इंटीजर में. सो देर इज अ चांसेस टू ऑकर द नंबर फॉर्मेट एक्शन. जो भी आपको लगता है, वॉट एवर यू थिंक कि that will cause the error, that will must be placed inside the try block. ये याद रखना है. या आपको कुछ ऐसा लगता है कि that causes error and my program will be terminated, that code must be placed inside the try block. Okay, so अब मैं यूजर से वैल्यू लेता हूँ यहाँ. So here I will write system dot ln. Message will be printed. Now we need to store that value. So here I will use that object of scanner class. Here I will next line. Okay, so that information will be stored in a A. Okay, whatever user enters, that will be stored in a A. This is a method sc dot next line. Instead of this next line, I can directly use next int. That means data will be converted into int. Okay, there is no need to do the typecasting. But यहाँ हमें exception generate करना है, so that's why first of all we'll convert the data. First of all we'll accept the data into string, and later on we will convert. अब यहाँ लिखता हूँ मैं int num1. Now I will do the typecasting. I will do the typecasting. Here we'll use the class integer dot pass int, and round bracket inside that I will use variable. इससे क्या होता है? See, integer dot parseInt, that means the conversion of string to int. कि अगर मुझे फ्लोट में करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपको फ्लोट लिखना होगा और यहाँ फार्स फ्लोट लिखना होगा. अगर डबल में करना है तो यहाँ डबल, उसका डी कैपिटल, यहाँ पार्स डबल लिखना पड़ेगा. दैट मीन्स स्ट्रिंग टू अदर डेट टाइप कन्वर्जन होता है. इसे टाइप कास्टिंग कहा जाता है. सो नाउ सक्सेसफुली वी कन्वर्टेड. नाउ आई विल डू व्हाट for time because we then I will use second value. I will change the variable name because same variable name नहीं use कर सकते हैं. Here I will use B. Now we successfully wrote the code, okay, which will accept the first value. Later on, it will be converted into the string to integer. Second value accepted. Later on, will convert it to the string to integer. We successfully accepted this value. Now, what should we do? We'll do the operation. Okay, before doing the operation, what should I do? Here I will remove one catch statement. एक कैच स्टेटमेंट में रिमूव कर देता हूँ. यूज curly brace. Now we'll do for only number format exception, and later on we will. Abhi, just see. Use. I don't know about the number format exception, so that's why I will use exception E. Okay. Inside that, just I will write one statement. Some dot out dot and then in text my message. I will write please enter numeric value. My message is plus and object E. That's it. Here I did not perform any arithmetic exception. मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन परफॉर्म किया है क्या? नहीं. सो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा? एक्सेप्शन क्लास नंबर फॉर्मेट को ही रेफर करेगा. इफ आई ट्राइंग टू राइट हियर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो फिर नंबर फॉर्मेट अगर नहीं होगा तो अरिथमेटिक जनरेट होगा. सी, इसमें मीनिंग क्या है कि एक्सेप्शन क्लास किसको जनरेट करेगा? वी हैड सम सिंक्रोनस एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. तो ये तीनों में से जो फर्स्ट आएगा उसे रेफर करेगा, बिकॉज सुपीरियर क्लास इज अ एक्सेप्शन. लेट्स सी. I will show you the terminal. Java C 2.
Compiled successfully. Now execute Java demo. So enter the first value. Here I will 12. Here I will use 23. That's it. Okay. Here we did not perform any kind of operation. I entered 12 and 23. That string automatically, that string will be converted into the numeric value. So error nahi generate hua. Now we'll run ONE 1. See, please enter numeric value. This is my text, and I'm trying to convert system error into user friendly message. See which type of exception is number format exception, but I did not wrote any statement about number format exception because I don't know about that. So what we do, if you don't know exception type, then we will provide the superior class name. So now what should we do? Here I will directly use add exception. See, number format exception. I will save this program and I will recompile it. Run 7 and here I will place. See, please enter numeric value. Same error. Number format exception. Same error यहाँ आ चुका है. Earlier just जब मैंने यूज किया था यहाँ, earlier मैंने यूज किया था. See, please enter numeric value java.lang.number format exception. यहाँ मैंने exception यूज किया था earlier, but यहाँ मैंने proper अभी exception यूज किया है. Okay, अभी ये क्यों कर रहा हूँ मैं? What is the reason? Because some program contains greater than one exception. In that case, we need to provide appropriate name. Okay, so अगर अभी यहाँ मैंने कोड लिख दिया system dot out dot kitchen is colon plus in round bracket 1 divided by just I wrote the second statement. Okay. In that case, if the exception occurs, if the exception occurs that did not handled, what is the reason behind that? ये exception अगर occur हुआ तो ये handle होगा क्या? नहीं होगा. Okay. If you want to check, then here at the bottom of catch statement, just one try statement. Here at the bottom of try statement, I will write one statement. Out dot and then here I will write one statement. Exception is not handled. For example, just I will do this statement. And now we will provide the number along with 0. Okay. So recompile that program. See, Java, enter first value. Here I will enter the 12 and second value is 0. अब यहाँ जनरेट कौन सा एक्सेप्शन होने वाला है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन. डिड आई रोट अ कोड फॉर द अरिथमेटिक एक्सेप्शन? नो. यहाँ मैंने लिखा है ओनली नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के लिए. अरिथमेटिक एक्सेप्शन का कोड यहाँ जनरेट होगा क्या? नहीं होगा. एक्सेप्शन इन अ थ्रेड मेन जावा अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय 0. मेन अरिथमेटिक एक्सेप्शन मैंने हैंडल ही नहीं किया. डिड आई गेट एनी मैसेज? Did I get any message? No. This is a system generated message. This one is a system generated message. अगर ये exception handle हुआ होता तो ये output की जो last line है ना that will be printed. Okay. Just I will make as it is and here I will try to handle the exception.
मैं exception handle करता हूँ, exception catch, and here I will write arithmetic exception object. I will paste it code. System, please enter. Just here I will write can't divide number by zero. Save that program. Now earlier the exception is not handled. Now check out. Here I will use 10. Now it is 0. See, now exception is handled. Can't divide number by 0, and see the last statement is executed. Last statement is executed. What does it mean? Means that the exception is successfully handled. See, the both output are same. Here I use 12.0, here I use 10.0. Earlier we get only system message. Now we get system message along with user friendly message. Along with user friendly message. So like that, like this way, we can use multiple catch statement. We can use multiple catch statement in a single program. This is the try and catch block. Exception was that try and catch. Similarly, there is other option here at the bottom of catch. We can use finally also. Finally, system dot then finally now check out Java, recompile that code. Now Java demo 2, first value is 10, second value is 2. See, division is 5. Did I get any exception? Did I get exception? No. Then executed 10 and 3. दोनों ऑप्शन दिखा रहा हूं मैं, एक्सेप्शन के साथ में भी दिखा रहा हूं एंड एक्सेप्शन के विदाउट भी रखा रहा हूं. तीनों देख लीजिए. First, I did not get any exception. Still, finally, block will be executed. Here I get the number format exception. Still, finally will be executed. Here I got the arithmetic exception. Still, finally will be executed. तो finally कभी भी execute होता है, उसे exception का कुछ लेना देना नहीं होता है. At the bottom statement will be executed. If we did not got any exception, if you got the exception, still finally will be executed. ये use नहीं होता है, but एक syllabus में है. That's why I given the example. Automatically, whether the exception we got, whether we did not got any exception, finally block will be executed. Okay. Till now, if you had any query, let me know. We'll discuss about it. After that, we'll discuss another point. Meet yourself and let me know if you had any query. Otherwise, we will. No, sir. Just 1 minute. Give me 1 minute. See, we learn about the try block, catch block. We learn about the multiple catch block, and we learn about the finally. Okay. Now we need to learn about the message types. Okay. So, for example, see, I will show you. Don't worry about it. In that case, just we are trying to pass object of exception. In that case, we are trying to pass object of exception. But
if you want to print different information, that means system error message, different kinds of system error message, then we have different methods. For example, just I will show you inside the catch block. Okay, so inside that, just I'm drawing catch. Here I will use exception. Here I will use E. Okay, this is the way to print the system errors. Okay, system errors or user friendly message. That means what kind of display message will be printed that are shown by using this method, catch exception. Similarly, there are different methods also. So like that catch in exception E. Inside that, just we print like system dot. Just I will show you with example. System dot said that we message along with object of exception. So हम ऐसे perform करते थे. Similarly, we'll do different kinds of thing. थोड़ा सा difference है. Just I will explain that. Exception E. After that we'll close. Okay, ये practice करना बहुत जरूरी है. Concept ऐसा नहीं कि थोड़ा हो रहा है, 30 minutes हो रहा है, but concept समझ में आ रहा है कि we need to do the practice like that. Okay, so here also use this message. So here I will use E object of exception dot get message method. This one is a method print only message. Okay, get message method क्या करता है? That will print only message. Okay, another method is there which will be print message along with line number. Error कहाँ generate हुआ है? Okay, so आपको ये question कहाँ पूछा जाएगा? Interview में पूछा जाएगा. Why should we use only E? Okay, exception का जो object है here, this one is a variable. Make a note of that. This one is a variable, and just we wrote some statement along with E. Okay, so ये ऐसा क्यों हो रहा है? Just I want to print only message. What method will be used? I will use E dot get message method. And if you require one more thing, if you require to print message along with line number, okay, कि exception generate कहाँ हुआ है, then what should we do? Here we will use catch. Yes, I will do examples also, don't worry. Inside that, here I will use same thing. Print stack this method again. So this method will print line number where the actual exception occurred. We had these three options. Okay, majorly developer uses this option, print stack trace. Why they use that method? What is the reason behind that? Because it will generate the line number also, actual where the exception occurs. Okay, let's do the practical. अब यही इसके अंदर ही हम प्रोग्राम बनाएंगे. Okay, so just I will copy paste. Here I will replace the name with demo3. We'll save that program और इसके अंदर हम अलग-अलग methods perform करेंगे, देखेंगे. Okay, and after that you need to do the practice. Just I will upload this lecture till 1 o'clock. Definitely I will upload today. और ये आपको प्रैक्टिस करना है तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं. और इसके ऊपर कोई भी एक्सेप्शन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा. ओके, मेक नोट ऑफ दैट. और एक बीट रिमेनिंग है हमारा थ्रू और थ्रोएबल का, सो वी विल डू इट टुमारो एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज द एक्सेप्शन चैप्टर. बट मेक नोट ऑफ दैट, इसके बियॉन्ड आपको क्वेश्चन कोई भी पूछा नहीं जाएगा. Okay, so now just in the bottom, just we will use different method. So now I don't want to use this statement. Here I will just write E dot
now I'm trying to file it. बट 2 नहीं है हमारे पास, 3 हो चुका है. Compile it. Java. So enter first value 10, 20. Did we get any exception? No. Okay, valid values है ना, exception का कुछ religion नहीं है. So here I will use 10 and here I will use 2. See, here we get the exception for input string 2. That's it. Did I get any system error message? Earlier I get the system error message along with string. Did I pass any output here? Okay, did I pass any message? So I will pass that message. Okay. Please valid numeric. Pass this statement and I will plus use. Okay. File it, run it, and okay. What kind of exception is what format exception? C for input string 2. This one. और इनपुट स्ट्रिंग 2 एरर कहाँ है कि जो आपने एरर दिया है ना 2 एंटर किया है वही एरर है. सो गेट मैसेज मेथड में ओनली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है कि एरर किस चीज में आया है. मैंने यहाँ मैसेज पास किया है, स्टिल दैट मैसेज इज नॉट डिस्प्लेड. स्टिल दैट मैसेज इज नॉट डिस्प्लेड. सी यहाँ अगर मैं 1 पास करता हूँ तो भी यहाँ फॉर इनपुट स्ट्रिंग 1 एरर दिखा रहा है, बट यहाँ कहीं यहाँ उसने सिस्टम एरर का मैसेज दिखाया क्या, लाइन नंबर समथिंग और क्या टाइप का एरर है, वेदर इट इज अ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, वेदर इट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन. सी विल डू वन मोर टाइम. यहाँ मैं 10 डिवाइड बाय 0 करता हूँ. सी प्लीज एंटर वैलिड न्यूमेरिक. एक्सेप्शन कहाँ जनरेट हुआ है? ओके, सो ये मैंने न्यूमेरिक में ऐड किया था. यहाँ कुछ अदर दिखाई दे रहा है क्या? गेट मैसेज की अदर थिंग्स जो अर्लियर दिखाई देता था वो कहाँ दिखा रहे? सो ओनली इट डिस्प्ले द कॉज. गेट मैसेज मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कॉज ओनली, रीजन बताता है, दैट्स इट. ओके, सो यहाँ मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. न्यूमेरिक वैलिड नहीं होता है यहाँ, मैसेज गलत हो गया. सो व्हाट शुड वी डू? विल कट पेस्ट, विल add here also put, and here I will use can't divide. So recompile it. Numeric वाला plus symbol remaining है. Concatenation legal start of expiration. सिंपल बाद में चाहिए था. Now okay. See value 10 यहाँ मैं लिखता हूँ 2. See please enter valid numeric for input string 2. यहाँ आपको ओनली रीजन दिखाई देगा, एक्सेप्शन का टाइप जनरेट नहीं होगा. मेक नोट ऑफ दैट. सो whenever we use the get message method, I already told that. See,
एक्सेप्शन में तो आपको कॉज भी दिखाएगा और फॉर्मेट का एक्सेप्शन भी दिखाएगा। अगर मैं ओनली एक्सेप्शन ई करता हूँ और जस्ट उसे प्रिंट करता हूँ, सी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोड के अंदर जस्ट नाउ हियर विल पास द बी। ओके, अभी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अलग लिया है मैं समझने के लिए कि नंबर फॉर्मेट का ई रहेगा एंड अरिथमेटिक का बी रहेगा, सेम रहा तो भी चलता है। ओके, सो अब देखो यहाँ मैंने ई डॉट गेट मैसेज मेथड यूज किया और यहाँ मैं ओनली बी डिस्प्ले कर रहा हूँ। दैट मीन्स हम जनरली जो करते हैं ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन बी, यहाँ मैसेज ऐड करके डिस्प्ले करते हैं, यहाँ मैसेज भी नहीं ऐड करेंगे आप। कंपाइल इट, कंपाइल डिवाइडेड बाय 0। सी java.lang.arithmetic exception, जब हम ओनली ऑप्शंस एक्सेप्शन का पास करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन इज वो जनरेट होता है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वो एक जनरेट होता है। ओके, सो मतलब कॉज एंड टाइप डिस्प्ले होता है एक मेथड से, ओनली कॉज डिस्प्ले होता है, ओनली कॉज डिस्प्ले होता है किससे, ई डॉट गेट मैसेज से, और जस्ट गेट मैसेज मेथड से कॉज डिस्प्ले होता है, ई से एक्सेप्शन से अलोंग विथ एक्सेप्शन टाइप और कॉज जनरेट होता है। अब सेम थिंग, अगर सेम थिंग में ई डॉट प्रिंट और प्रिंट स्टैक ट्रेस, ई मतलब ऑब्जेक्ट है, मेक अ नोट ऑफ दैट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, सो अगर मैं यहाँ प्रिंट स्टैक ट्रेस ये मेथड अगर यूज करता हूँ तो क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, एक तो आपका टाइप ऑफ एक्सेप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, सेकंड कॉज ऑफ एक्सेप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, along with लाइन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो बी डॉट प्रिंट p is an object of exception, instead of that I can use e also, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ e यूज नहीं कर सकता हूँ, I can use the e also। okay, it is a type of exception, अगर exception कॉल होता है तो इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। राइट नाउ प्रिंट स्टैक प्लस देखते हैं, recompile it, so instead of that just I will recompile it। Then now Java demo 3, enter first value and here I will use 0। अभी एक्सेप्शन को जो लिखा है हमने यहाँ किसके अंदर लिखा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन अंदर। मेक नोट ऑफ दैट, इसको ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर नहीं लिखना है, बाहर लिखना है डायरेक्टली। ओके, दैट मेथड, ओके, ऑटोमेटिकली इट विल बी डिस्प्लेड। सी अब एक्सेप्शन जनरेट हुआ, फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेप्शन आ गया, टाइप ऑफ एक्सेप्शन आ गया, सेकेंड कॉज ऑफ एक्सेप्शन आ गया, थर्ड लाइन नंबर आ गया, लाइन नंबर 16 पे एरर जनरेट हुआ है। ओके, और मेजरली डेवलपर जो होते हैं ना यही मेथड यूज करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दे हैड lots of line of code। okay, for example they are developing an application, inside that yeah, they need to find the exception, so they are using a lots of line of code, actually they are using a print stack trace method to get the actual location line number where they can repair or we can say that modify। सी लाइन नंबर 16 पे एक्सेप्शन जनरेट यहाँ हुआ है क्या, नहीं, लाइन नंबर 16 कहाँ है, सी लाइन नंबर 16 यहाँ है। error occurred in this line number because number divided by 0 लिखा है, तो एक्चुअली जहां ट्रेस हुआ है उसकी लाइन नंबर नहीं आएगी, एक्चुअली एरर जनरेट कहाँ हुआ है वही आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ मैं ना इसको भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इसमें दो अलग लाइन आ सकते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 के लिए। ओके, कंपाइल इट, first value here I will use 1, error occurred, see 1,
number format exception type. This one is a type. This one is a reason. Okay, and this one is a line number. Okay, ये कौन सा है? लाइन नंबर. कितने लाइन क्या आएगा? 10 नंबर. अब 10 नंबर की लाइन चेक करो एक बार. Where is that 10 number line? See, actual this line पे exception occurred हुआ है. यूजर ने एंटर किया, स्ट्रिंग में स्टोर हुआ, यहां तक एरर नहीं है. बट जब हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, टाइप कास्ट मतलब कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग टू इंट, इन दैट लाइन नंबर वी गेट द एरर. अब सेम प्रोग्राम हम क्या करेंगे, वन मोर टाइम रन करेंगे इसको. यहाँ 10 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे. ओके, अब लाइन नंबर चेंज होगा. अर्लियर इट वाज अ 10. बिकॉज अभी लाइन नंबर क्यों चेंज हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जहां एक्सेप्शन ऑकर्ड हो रहा है, देन वी गेट द एरर. जहां एक्सेप्शन ऑकर्ड. Now check line number 14. See, typecasting. क्या दे रहा है? So ये होता है exception handling. अब कल हम थ्रो के बारे में पढ़ेंगे एक बार. After that we will close the session. Okay. Right now, till now, if you had any query, let me know. We'll discuss about it. Till now, if you had any query, let me know about it.